क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है? 51 में स्ट्राइप्स के बारे में बात किया गया एंड स्ट्राइप इज इशूड थ्रू अ पीरियोडिक प्राइमरी ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्राइप जो है, अब पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउड था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट को भी अलाउ किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट ट्रेडिंग होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का, और एसएलआर कोटा अलाउड होता है इसमें। रिटेल एंड अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल investor are eligible to buy and hold the strike may be correct in the secondary market. Which of the following statement is incorrect is simple सा option 1, because the strike are issued through periodic primary auction conducted by RBI similar to treasury bill and dated government security. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज स्ट्राइप आर नॉट इशूड थ्रू प्राइमरी ऑक्शन बाई आरबीआई, इंस्टेड दे आर क्रिएटेड बाई सेपरेट स्ट्राइपिंग द कूपन पेमेंट एंड द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑलरेडी इशूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। सो ये तो पता है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इज नॉट issued by the private corporate entities, it is only issued by the central government. So first statement is wrong and it is credited to the consolidated fund of India. So ये भी करेक्ट है, it is credited to consolidated fund of India, SLR quota. Then Indian sovereign green bond framework specify the certain activities that are excluded from the financing. Question number 53. यहाँ क्या बोल रहा है? With reference to banking regulation in India, the term unclaimed deposit recently seen in the news in the context of RBI initiative, and it refers to what? So, with reference to banking regulation in India, the term unclaimed deposit recently seen in the news in the context of RBI initiative, it is option D, which are transferred to the specific fund but continue to legally belong to the depositor. Next है क्वेश्चन नंबर 54। सो इसका ऑप्शन 2 होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ ग्रांट इन एड होता है, सब्सिडी एंड फूड एंड फर्टिलाइजर यही होता है, बाकी दोनों एक्विजिशन ऑफ लैंड और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ऊर्जा सुरक्षा रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज सेफ ट्रांजिट ऑफ इंडिया बाउंड क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 55। Question number 56 is considered the following statement regarding the Patent Act of India. A new form of a known pharmaceutical substance is patentable only if they demonstrate enhanced therapeutic efficacy. So which of the following is correct with reference to Patent Act of India? So as per 56, option 1, 2 and 3 is correct. It means Statement 1 is correct because Patent Act of 1970 incorporate Article 3D, which set a stricter standard for pharmaceutical patent and provide that new form of known substance is patentable only if it demonstrate enhanced therapeutic efficacy. ठीक, so option 1 is correct. Next is compulsory licensing. Under this provision, a third party can seek a permission to manufacture and sell a patented drug without the consent of the patent holder, but only after the 3 year from the grant of the patent. ठीक है, 3 year from the grant of the patent के बाद ही वो सेल कर सकता है. It means third party can seek a permission to manufacture and sell a patented drug without the consent of the patent holder, but after the 3 year from the grant of the patent. India first compulsory licensing grant to Natco Pharma for cancer drug patented by Bayer in 2012. Every patient in India is granted for uniform term of 20 years from the date of filing of the application, and this applies irrespective of the field of technology. ठीक है, Question number 57. Consider the following fiscal policy action. Increase the government capital expenditure. Enhance the budgetary allocation for agriculture support. Raising the indirect taxes. Increase the grant in aid to state.
How many of the above action would the government of India typically not take during the recession period? Not take during the time of recession period. कौन सा एक्शन नहीं लिया जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिसेशन पीरियड? आर इंक्रीज तो करेगी, फर्स्ट तो नहीं होगा. इनहांस द बजटरी एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर सपोर्ट, फर्स्ट सेकंड दोनों होगा. रेजिंग द इनडायरेक्ट टैक्स, ये नहीं होगा. इंक्रीजिंग अ ग्रांट इन एड टू द स्टेट हो सकता है. सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ होगा, ओनली वन नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स PLFS 2025 considered the following statement. In the first PLF, in which the survey cycle has been shifted from June, July to January or December, ये correct है. In rural area, the unemployment rate among the female is lower than among the males. Unemployment rate जो female में है वो कम है as compared to male, ये correct है. Labor force participation ratio for male is more than 3/4 of the male population in both the rural and urban area. The proportion of the Indian workforce employed in casual labor is higher than those engaged in the regular wages or salaried employment. So ये wrong है because salary और casual का ज़्यादा है. salaried का ज़्यादा है, salaried का ज़्यादा है, casual worker का same है as per the NSO by MOSPI. ठीक है, National Statistical Organization by MOSPI के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 में फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट एंड फोर्थ इज रॉन्ग बिकॉज द सैलरी ऑफ रेगुलर एंड सैलरीड एम्प्लॉयड का इंक्रीज हुआ है वाइल द कैजुअल जो है वो रिमेन स्टेबल है. सेल्फ एम्प्लॉयड इज स्टिल द लार्जर कैटेगरीज विच इज 56%, बट कैजुअल लेबर इज नॉट हायर देन रेगुलर वेजेस. कैजुअल लेबर जो है इट इज़ नॉट हायर देन रेगुलर वेजेस. कैजुअल लेबर इज नॉट हायर देन द रेगुलर वेजेस. सो यहाँ पे सैलरीड, the proportion of Indian worker employed as a casual labor is higher than those engaged in the regular wages or salaried employed. Wrong, because casual labor का ज़्यादा नहीं है. Casual labor का ज़्यादा नहीं है. Casual labor remains stable. Casual labor remains stable at around 20%. Self-employed का ज़्यादा which is 56%, and share of regular and salaried wages is 26.6%. अगर हम बोले तो सैलरीड और लेबर का सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट कैटेगरीज, एंड सैलरीड का उसके बाद है, और कैजुअल का 20% है.